Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation, and under this chapter presently we are doing the agenda for a national education, and in this regard we are knowing the views of Mahatma Gandhi, who was one of the most important national leaders of India. So, his views on education. As we have started our discussion in the previous class, that he was of the opinion that English education has enslaved us. है Because of English education, what happened that a sense of inferiority is created in the minds of the Indians are seeing the Western civilization as superior, and it completely destroyed the self-respect. It destroyed the we can say it destroyed the pride which they should have there to which should have been there for the culture. So these are the problems, and that is why Mahatma Gandhi was of the opinion that there was poison in this Western education, in this colonial education, and this education has enslaved us, and we appreciate everything that come from the West, and the Indians who are educated in these Western institutions, they admire British rule because they are given education in Western institutions. So their mind is enslaved, and now they are admiring British rule, the rule which is based on the principle of inequality, which is based on the principle of injustice, which is based on the exploitation of the Indians. The Indians themselves, the educated Indians themselves, are admiring the British rule. So he wanted that there should be an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect, है ना. एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको डिग्निटी दे. आप अपने आप को अगर दूसरे से इंफीरियर मानेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत हमको प्राइड में रहना है. नो, देयर मस्ट बी सेल्फ रिस्पेक्ट. There must be respect for yourself. You must have some dignity in your life. So these are the opinion of Mahatma Gandhi, and he always urged students to leave the Western educational institutes if they want to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. So in this way, if you will stop studying in Western institutions, if we will start boycotting the Western education institutions, then the British will understand that Indians are now, the Indians want now to be independent. They are no longer willing to be enslaved. अब उनको गुलामी नहीं चाहिए. Now they want to be free. तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना होगा. बॉयकॉट का क्या मतलब हुआ? उसमें नहीं एडमिशन मत लीजिए, उसमें पढ़ाई नहीं करवाइए बच्चों की, है ना. सो महात्मा गांधी वॉज ऑफ द ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. द सेकेंड थिंग वॉज दैट इंडियन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. जो भी पढ़ाई कराई जाए स्कूल्स में वो सारी इंडियन लैंग्वेज में ही होनी चाहिए. देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल, है ना. बिकॉज व्हेन वी आर गेटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश, एक्चुअली इट इज डिस्टेंसिंग अस फ्रॉम आवर ओन सोशल सराउंडिंग. बिकॉज उस समय एट दैट टाइम ऑल्सो एंड इवन टुडे द सेम सिचुएशन इज प्रिवेलिंग. If you are getting education in English medium at that time, especially we are talking about this pre-independent era, so this English education is actually distancing you
from your own social surrounding. You start considering कि हम इनसे अलग हैं, जो हमारे चारों तरफ का की सोसाइटी है हम उससे अलग हैं, because I am getting education in English language, है ना. और because of this what happened that these students who are studying in Western education institutes, they have become stranger in their own lands. स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, अपनी ही जगह पे, अपनी ही जो धरती है, अपनी जो लैंड है, अपनी जो कंट्री, अपनी जो सोसाइटी है, वहीं पर वो स्ट्रेंजर बन गए. वो अपने आप को औरों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते, वो अपने आप को उनसे अलग मान के चलते हैं. सो दे हैव बिकम स्ट्रेंजर, है ना. दे आर स्पीकिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. They are disrespecting their local culture. So English educated people are not they did not know how to relate to the masses. वो अपने आप को जो masses क्या, common people, है ना, masses, common people. So, because of this English education, they are not. They think that they are not one among the common people. इनसे वो अलग है, इनसे वो ऊपर है. So this is causing a heavy loss to the Indians. He was also of the opinion. This is the second thing. Then we see that Mahatma Gandhi, his focus was on reading and writing. What is important that his focus was not on reading. Western education focused only on reading and writing, while Mahatma Gandhi was of the opinion that reading and writing is not so important. What is important is oral knowledge. As the system which was existing in Bengal and Bihar, about which that Adam has given the report, about which we have studied in the previous classes, कि the education was completely oral. One guru was there and 20 people was there with one guru, and he used to give oral knowledge to the students. There was no textbook, है ना, there was no notebooks, no textbook. Only oral knowledge was there. So Gandhiji is also supporting that system in which oral knowledge is given importance. Instead of giving value to the textbook, what is important that there should be given importance to live experiences. जो हमारे लाइफ के जो practical experiences होते हैं, practical knowledge होते हैं, that is more important. Books में जो this is the view of Mahatma Gandhi कि reading, writing, textbook, ये सारी चीज़ें अपनी जगह important है, but इनसे ज़्यादा important oral knowledge होता है, इनसे ज़्यादा important practical knowledge होता है. जो एक गुरुकुल सिस्टम के अंदर जो गुरु अपने शिष्यों को, अपने pupils को देते थे, है ना, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें बताते थे. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. एजुकेशन का जो पर्पस है वो ये है अकॉर्डिंग टू गांधी. एजुकेशन, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप अ पर्सन's माइंड एंड सोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? So according to Gandhi, the purpose of education is to
develop a person's mind and soul. So education is not only how to read, how to write. No, the purpose of education is to develop the mind and soul of the person, and this can be developed only by knowledge, which is the most important thing in our education system. So education does not mean, according to Gandhi, that only to read and write. That is true also. आप सिर्फ लिखना पढ़ना जान जाएंगे, that is not education. Education is that your personality should be complete. There should be complete development of the personality. And moreover, Gandhi was also of the opinion that handicrafts are very important in life. He was of the opinion that people have to work with their hands, है ना. So they must learn a craft, कुछ एक स्किल उनको जरूर आना चाहिए अपने हाथों से बनाना, जिसको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें, है ना. So he focused, he stressed on the handicraft. The student must learn a craft and he must know how different things work, है ना. So Gandhi was of the opinion कि education should be such that after the completion of the education, the student should be in such a condition that he can start his own work by making something from his hand. So that skill should be developed in the students instead of only giving them this reading and writing opportunities. No, they must be taught to learn how different things operated. They must be taught to develop a particular craft so that they can become independent economically after getting education. They should not be dependent on the system कि अब हमें ये डिग्री मिल गई, अब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. नो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होइए, अपने से अपने एक क्राफ्ट जो कुछ भी आपने लर्न किया है उसके बेसिस पे आप अपना वर्क स्टार्ट करिए. तो दिस वाज पूरी उनकी एजुकेशन को के रिलेटेड उनकी पूरी की पूरी थ्योरी है, जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही लॉजिकली प्रेजेंट किया है. बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में ही वॉज अगेंस्ट दिस मशीनरी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट अगर हम अपने जैसे हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आज के समय में है, तो ये क्यों है? क्योंकि इस पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं ध्यान देती. आज के समय में फिर से वो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए. दैट इज़ द पॉइंट गांधी फोकस्ड कि स्किल की डेवलपमेंट करो, ताकि वो खुद उनके अंदर, बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाए कि उनको किसी अपने सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे डिपेंड ना होना पड़े एम्प्लॉयमेंट के लिए. वो खुद ही एजुकेशन पूरा होते होते वो इस इतने वो उनके अंदर क्वालिटी आ जाए, ये स्किल डेवलप हो जाए कि वो अपने दम पे अपनी लाइफ को लीड कर सके. सो दिस वाज द ओपिनियन ऑफ गांधी ऑन एजुकेशन. So what are important thing about Gandhi? He was of the opinion that English education has enslaved us. We must boycott the English educational institutes. Then he was also of the opinion that the Indians should be taught in the Indian languages only. And he was also of the opinion that reading and writing is not as important as oral knowledge, lived experience and practical knowledges. Then he also stressed on this learning a craft and knowing how different things operated. Okay, so now we will see that Gandhi was a nationalist leader. He was a mass leader, है ना.
पूरी की पूरी जो पीपल थी, जनता थी, उनके वो नेता थे. तो इनके जो व्यूज़ थे रिगार्डिंग एजुकेशन, दैट ऑल्सो स्टार्टेड टू influence the whole people, and it also started to influence other thinkers. They also began thinking of a system of national education. National education हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे इट इज़ नॉट वेस्टर्न एजुकेशन, है ना. हम वेस्ट से कुछ भी नहीं हमें अडॉप्ट करना है. जो हमारी कंट्री का की चीज़ें हैं उसी को हमें आगे बढ़ाना है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेशनल एजुकेशन. सो other thinkers also started to think of a system of national education which would be different, completely different from the education which was imparted by the Western institutions. Okay, so this is about Gandhi, and now we will see the opinion of Rabindranath Tagore. The views of Rabindranath Tagore on education. Okay, education के regarding Rabindranath Tagore के क्या view थे? He also comes under this national education. He also supported a new system of this national education, and we see that one of the schools was one of the most important school which is still present today, Santi Niketan. You may have heard the name of Santi Niketan, which is in West Bengal. So this Santi Niketan it was started by Rabindranath Tagore only. He started this institution in 1901. And what is the meaning of Shanti Niketan? शांति क्या हुआ? इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या होगा ये? Just wait a moment. शांति निकेतन. You all know the meaning of शांति, peace, है ना? पीस. और निकेतन आपने हिंदी में पढ़ा होगा. निकेतन का मतलब होता है घर, शांति का घर, अबोर्ड ऑफ पीस. दिस इज द मीनिंग ऑफ शांति निकेतन. एक ऐसी जगह जहाँ पर शांति मिलती है हमें, ठीक है. दैट इज स्कूल, है ना. सो इट इज कॉल्ड शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस. इसको अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है. अबोर्ड क्या हुआ? जहाँ हम रहते हैं, जो जगह रहने का जगह होता है, दैट इज कॉल्ड अबोर्ड. सो शांति निकेतन मीन्स अबोर्ड ऑफ peace. Okay, now we see that Tagore, when he was a child, he hated going to a school. He did not like going to a school because he found the system of schooling which was present, the Western institution. He also got education in Western institutions only. So he found that it was suffocating and oppressive. सफोकेटिंग क्या हुआ? जहाँ पर आप दम घुटना जिसको कहते हैं. सफोकेशन क्या होता है? जब हम सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर हमें नहीं मिल पाती, दैट इज़ कॉल्ड सफोकेशन. मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, है ना. मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इसका मतलब मुझे सफोकेशन हो रहा है. तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, ही फाउंड दैट द स्कूल्स वर सफोकेटिंग. जहाँ पर आप
आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपकी बॉडी को, कहने का ये मतलब इट डज नॉट मीन कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको वहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर आपको रहना पड़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन योर पर्सनालिटी इज नॉट able to be developed in full sense, and that is why it is called suffocating. And the system was also oppressive मतलब जहाँ पर जैसे पनिशमेंट होता है, अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, तो दिस इज़ ऑप्रेसिव। जहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है सताने वाला, द सिस्टम वॉज ऑप्रेसिव। सिस्टम ऐसा था स्कूल का कि जहाँ पर जो कोई भी रूल से डेविएट होगा उसको पनिश किया जाएगा, है ना। तो बहुत सारे अभी हमें चीज़ें पढ़नी है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। वी विल कंटिन्यू विथ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।